Our top focus story this Saturday evening ahead of the cabinet expansions tomorrow. Calls have started going out to BJP leaders who can be probable candidates for receiving a rank in the new Council of Ministers. It has been reported that leaders Ramkirpal Yadav, Giriraj Singh, Vijay Sampla, Hansraj Ahir, Sanawar Lal Jatt and Virendra Singh Rana have already received calls from the Prime Minister's office to be present in Delhi on Sunday. In addition to this, Singer-turned-BJP Member of Parliament Babul Supriyo has also received a call. Other people who have made it to the list are Dr. Mahesh Sharma and Badaru Dattariya, bringing the total number of probables to 16 in the cabinet. Now let's take you through some of the names who are likely to get a cabinet berth. Patna Member of Parliament Ramkirpal Yadav, an anti-Lalu Yadav face for the BJP, had quit the RJD to join the BJP after being denied the Lok Sabha ticket from the Patlipatra constituency in Bihar. Nevada Member of Parliament Giriraj Singh, the BJP's Bhumiyar face for Bihar, is being rewarded for taking on Nitish Kumar in the state. Hoshiarpur Member of Parliament Vijay Sampla, and a Dalit BJP leader and an RSS activist from Punjab, has also been called in. The second from this state after the Akali Dal's Harsimrat Kaur. Chandrapur MP Hansraj Ahir is also on the list. He had exposed the coal block scam during UPA 2. Ajmer Member of Parliament Sanwar Lal Jatt is one of those who has also made it to the list. He is, remember, the person who defeated Congress's Sachin Pilot, a heavyweight, in the Lok Sabha elections. The BJP is also looking to pacify Haryana Jat leader Birendra Singh Rao, who was expected to be made the next Chief Minister but was not. We have with us Mr. Hansraj Ahir, who is slated to be inducted into the Union Cabinet on Sunday. Let's have a word with him. Sir, is it the right time to say congratulations? मैं आपको धन्यवाद तो दूंगा. एक्सपेंशन हो रहा है और कुछ मंत्री महाराष्ट्र के बनने वाले हैं. सर, कोयला घोटाले को, कोल स्कैम को लेकर आपने बहुत काम किया. आप एक विसल ब्लोअर थे इसको पूरे लेकर. तो बात ये चल रही है कि आपको कोल मिनिस्ट्री का ही कार्यभार दिया जाएगा. देखिए, ये बात तो सही है कि कोल स्कैम जो हुआ था उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इस मामले को उजागर किया था और मेरे पार्टी के नेताओं ने भी इसको समझकर काफ़ी लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी मुझे अवसर दिया और जिससे देश का भारी लाभ भी हुआ है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे माना है और उसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से निर्देश दिए हैं उससे साबित होता है कि हमारा जो आरोप था वो आरोप नहीं था बल्कि उसमें सच्चाई भी थी और वो साबित भी हुआ है. तो इसको लेकर निश्चित ही पार्टी के नेताओं में हमारे प्रति अच्छे भाव होंगे ही और ये नहीं कि अगर हमें मंत्री बनाया जा रहा है तो वही विभाग मिलेगा, बल्कि ये मैं आपको कहूँगा कि मुझे यही बात को लेकर मुझे एक स्टील एंड कोल कमेटी का चेयरमैन भी बनाया है, तो शायद उसी को सामने रखा है. और अगर और दूसरी जिम्मेदारी मिलती है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसी विभाग से मिले, और भी कोई मिलती है मिलेगी तो, और जहाँ भी मिलेगी उसको न्याय देने का काम और कर्तव्य और मेरा धर्म बनेगा. Thank you for speaking with Headlines today, Mr. Hansraj Ahir, who's all set, prepared to take the responsibility. With camera person Bhati Atir Khan in Delhi for Headlines today. और कल जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसमें शिवसेना की तरफ से अनिल देसाई जी का नाम हमने नॉमिनेट किया है उद्धव ठाकरे साहब ने, और कल के शपथ ग्रहण में शिवसेना के ये मंत्री शपथ लेंगे. इस प्रकार का निर्णय हुआ है. Meanwhile, yet to bury the hatchet, the Shiv Sena leader Uddhav Thackeray has proposed the name of Anil Desai, but he has obviously put in a rider that the Maharashtra situation needs to be sorted out by today evening, failing which Anil Desai will not take oath tomorrow. All right, V.S. Sampla is also likely to be sworn in tomorrow. He is one of the 16 people who has in fact received a call from the Prime Minister's office. Let's listen in to what he had to say. We have with us Mr. Vijay Sampla, who will be inducted in the Union Cabinet. Let's have a word with him. Sampla साहब, एक बहुत भावुक क्षण रहे होंगे आपके लिए जब प्रधानमंत्री की ओर से आपके पास टेलीफोन कॉल आया कि आपको उनके पास चाय के लिए आना है. निस्संदेह, वैसे तो चाय के लिए तो पहले भी बहुत बार गए हैं, बुलाया है,
और ऐसे ही शायद उन्होंने बुलाया होगा, मगर मीडिया में जो सुनने को आ रहा है तो उसे सुनकर तो एक भावुकता तो वैसे ही अपने आप में है कि एक मजदूर व्यक्ति जो कभी बेलचा चलाता था आज किस मुकाम पे पहुंचा, ये भी कोई कम नहीं है। और बाकी तो मुझे फ़ख्र गर्व है अपनी पार्टी पे कि जिसमें पूंजीवाद और भाई भतीजावाद नहीं है, रिश्तों की नहीं काबिलियत की कदर है। तो ऐसी पार्टी में जहां चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बनकर अपने आप को अपनी क्षमता के अनुसार पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा सकता है, और मुझे भी आशा है कि वहीं एक बेलचा चलाने वाला भी आज इस मुकाम पर पहुंच गया कि सबसे निचले दर्जे का व्यक्ति सबसे ऊपर वाली पंचायत में बैठा है। यह भी कोई कम गौरव की बात नहीं है। सांपला साहब, एक बहुत लंबी जद्दोजहद रही आपकी, कई आंदोलनों से आप जुड़े रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं और अपने ही मुँह से लोगों को बताइए अपने बारे में। मैं कभी अपने लिए नहीं लड़ा, बस जैसे जनता के लिए हमारी ड्यूटी में शामिल है। हम राजनीतिक क्षेत्र में पब्लिक के हितों के लिए लड़ना और उनकी आवाज़ उठाना और उन्हें न्याय दिलाना, यही हमारा फ़र्ज़ है और वो हमने किया है। सांपला साहब, प्रधानमंत्री ने आपका चयन किया है, तब उनकी जो विज़न है, जो उनकी सोच है, उसको आप आगे कैसे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं? बस मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो विश्वास पार्टी ने या हमारे प्रधानमंत्री जी हम पे कर रहे हैं, मैं उनके विश्वास के ऊपर खरा उतर के दिखाऊंगा। समारोह के लिए रविवार को जो हो रहा है, कोई ख़ास तैयारी आपकी, कोई वेशभूषा, क्योंकि आप बहुत ही एक खूबसूरत वेस्ट कोट पहने हैं, तो कोई इस तरह के वस्त्रों की तैयारी? मैं हमेशा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहनता हूं और कभी कोई शौक़ नहीं है कि ऐसा पहनना वैसा पहनना, सिंपल सादा ही पहनता हूं और जो मिल गया वो पहनता हूं। कोई स्पेशल पहन आया है या वैसा ऐसा कुछ नहीं है, जो बना बनाया ना इधर ही पता चला और इधर ही हूँ मैं। सो ऐसा ही सिंपल हमारा रहना है, और कोई स्पेशल ऐसे काम के लिए कोई विशेष वस्त्र होना, मेरे हिसाब से वस्त्र ज़रूरी नहीं है और काम ज़रूरी है। और जो कहीं भी अब ये वस्त्र किस लिए कह रहे हैं, अभी तक तो ये भी मुझे अभी तक तो मेरे पास वो भी स्पष्ट नहीं है, तो मैं उसके लिए क्या, तो मेरा डेली के रूटीन यही आम नॉर्मली बस यही पहनना है। और मैं सफ़ेद कुर्ता पजामा ही पहनता हूँ, जैकेट कोई जो दे दें वो पहनता हूँ। मैंने आज तक कभी मार्केट में एक रुमाल भी नहीं खरीदा। अच्छा सांपला साहब, वैसे तो कई सांसदों के कार्यभार के बारे में बात चल रही है, आपके कार्यभार के बारे में कोई स्पष्टीकरण हुआ है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो कहा ही है कि आप किस तरह के वस्त्रों की किस लिए कह रहे हो, तो मुझे तो वो भी स्पष्ट नहीं है, तो मैं बाकी की बात कैसे करूं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना ही मेरी कोई ऐसी इच्छा है, ना ही मेरी कोई ऐसी कभी सोच रही है। All right, that was Vijay Sampla, who is in fact a Dalit BJP leader and an RSS activist, saying that he has been invited to tea but does not know why the Prime Minister has in fact called on him tomorrow. I'm joined at this point in time by Deputy Editor Brijesh Pandey from the National Capital. Vidya is also joining us live from Mumbai. Brijesh, I'd like to come to you first. Crucial rejig happening tomorrow. You've confirmed to us that so far there are 16 people who have in fact received calls from the Prime Minister's office. Take us through the latest. Well, the Prime Minister has the Prime Minister's office has till now made call to 16 people, and they have almost all of them have either reached Delhi or will be reaching Delhi by the end of the day. And tomorrow, the first thing they will do is that they will go to 7 RCR to have a cup of tea, and what our sources have told us that dhokla will also be served along with the tea. And apart from that, there will be a meeting between all the newly inducted ministers as well as the Prime Minister. After that, the Prime Minister has to go for a function at Vigyan Bhavan, and he will come to 7 RCR after that, and at around 1 PM we will see all these newly inducted ministers to be administered the oath and secrecy by the President, and post that then again there's a meeting at the Prime Minister's office. So all of this, the purpose of this particular expansion is, Rishika, is there are twin purposes. First is to ensure that that the work burden of the key ministries and the ministers is to be lessened considerably by this particular expansion, and this
expansion is also aimed at the pole-bound states of Uttar Pradesh and Bihar, and this also takes care of the rising aspirations of Bharatiya Janata Party in the West Bengal as well. So this particular rejig contains a message for the pole-bound state as well as lessening the burden of the key ministers who are very, very overburdened with the work of several ministries at one disposal. Well, those are very crucial points that you make there, Brijesh, that it is in fact aimed at obviously lessening the burden. Remember, Modi had initially constituted a very small cabinet, many ministers there holding dual charge of portfolios, so therefore definitely lessening the burden, but also targeting pole-bound states. That's an interesting point. I'd like to cut across to my colleague Vidya, who's joining me live from Mumbai at this point in time. Vidya, you know, very interestingly, Uddhav Thackeray has proposed the name of Anil Desai, but at the same time, he has given a rider saying that the Maharashtra issue needs to be dissolved by this evening. Now, BJP is known to not take very kindly to the politics of ultimatum or conditions that the Shiv Sena has tried to play in the past as well. What are we likely to see happen this evening? Well, it certainly is. BJP has been pushing forward, you know, the date for taking a decision on expansion of the ministry in the last to almost post November 12th. Right. But the Shiv Sena really wants to know before it really votes in the show of confidence in Vidhan Sabha on November 12th. It has to know what portfolios it's getting, and that's the reason why they really want a decision to be taken today, because they also have a meeting with all the MLAs of Shiv Sena is being held tomorrow at Shiv Sena Bhavan. So that's the reason before all of them meet to take a decision on for November 12th, they need to know what the position of the party is. Right. To be able to take a further decision. All right. So before the vote of confidence on the floor of the Maharashtra Assembly on November 12th, it does appear that there are terms and conditions being put forth by the Shiv Sena for the November 9th swearing in of the new Council of Ministers.